Om Sri Sai Ram. My most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan, Sri Satya Sai Baba. I'm indeed grateful, rather thankful to all of you who would be listening to my experiences with Swami here in this platform, Religion of Love, Sai Ke Sang. As I informed my elder sister Rohini, she came into Sai fold at a very, very early age because she lost my brother-in-law. And ever since she's been in Sai fold till now. We used to wonder why, at a very yester age, I would say young age, that she went into Sai fold. I mean, we all used to think, getting into a religious fold is somewhere around, when you attain an old age, say 60, 65 or so. But then, पता नहीं लगा कि क्यों ऐसे होता है. But only when you got into it, you get to know कि क्या है, what is religion all about. So we always, she used to come to our place, we used to go to her place. And every time when I used to go there, she'd say, oh, no, I'm in a hurry, I have to go to a bhajan, I have to attend to a study circle, I have to go for this seva, I have to go for that seva. We were wondering, kya har baar ye busy rehti hai aise? What is it all about? So once it happened, we went to her house and she said, oh, ho, tum log abhi aaye ho, I have to rush now for a bhajan session. And in case you want to join me, please do so. And if you feel, you're bored or something to attend to the bhajan, you can leave quietly. So we said, okay. So this bhajan was somewhere in Saraswati Bihar, in whose place the bhajan was, the person was serving the Indian Army, and that was his first death anniversary, who fought in the Kargil War. So we attended the bhajan, and I really do not know, I was sitting far behind in the row, the ladies' row, and I was, looking at Baba's picture and started profusely, weeping and weeping. Oh my God, why I was wasting all my time these days? Why didn't I come to your fold before? And I was following all the bhajans because the bhajans were in Hindi. And the bhajan got over. And there were one couple there, Mr. and Mrs. Mehra, who said, oh, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ. So I said, but I don't know any bhajans, I'm not learned anything. It's just that I attended and I was following it up. So the bhajan got over, and then I told my sister, I said, okay, I'm going. Please let me know in our area who should I get in touch with, because I would like to participate in the bhajan session too. She gave me the contact of our convener, the then Mr. C.P. Singh, who was, very close by to our house. And she said, you get in touch with him and tell him that you're my sister. He'll guide you how you'll, further pursue this. So I came back home. I went to Mr. C.P. Singh's house, very close by to our house. So I went there, I got myself introduced, said that, uncle, I'm from so-and-so place, and I'm Rohini's sister. So I would want to attend to the bhajan cycle. And in case there are any trainings being held, please let me know. I would love to. He asked me, beta, aap gaate ho? I said, yes, uncle, gaati hu, but maine bhajan seekha nahi hai. Didi ne 1-2 bhajan sikha. He said, okay, fine. We have a temple at C2 block in Janakpuri. It's called as Gita Mandir. And we hold bhajans there on all Thursdays from 7:30 to 8:30. So just in case you're free, you please come. I said, okay, uncle, I'll do that. So one of the Thursdays, he gave me a call and he said, beta, wahan pe bhajan hai, main abhi ja raha hu, aap chalogi? So I said, uncle, I'll come. Thoda sa late ho jaungi, but main aungi zarur, main aati. So I fetched a rickshaw and I reached that place, and the bhajan was already on. And I was sitting in the last row. I think it was the 8th row or the 9th row where I was seated.
The temple had a crowd of about 150 to 200 people attending those days, the bhajans. This, I'm talking about 1983, beginning of 1984. And I attended the bhajan. Then CPC uncle gave a small slip to the ladies bhajan in charge. That was Mrs. Rajamani. So he gave the slip to her saying, in the 9th row, there's a lady sitting. Please pass on the mic to her to sing a bhajan. So everybody looked behind and they gave the mic to me and I sang the bhajan. It was a Krishna bhajan that my sister taught me. And after that, the bhajan got over. And when we were just moving out from the bhajan hall, everybody came around me, like the bumblebee, they come in. So they said, "Beta, kahan se aaye ho? Aap kahan rehte ho?" So everybody started inquiring. I said, "मैं यहाँ रहती हूँ और मैं रोहिणी की sister." So they said, "अच्छा, हमारे घर भी आया करो, यहाँ पे भजन होता है, वहाँ पे भजन होता है." So they gave me a full list of the bhajans being held for the whole of the month and all the activities being printed over there. So this was going on, and then came the time where we were to go for the Prashanti Seva. And those days, it used to be in the month of August. So people used to come and motivate everybody, Prashanti Seva में आना चाहिए, जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, बाबा के यहाँ सेवा करनी चाहिए. So there came one couple to our house, Dr. and Mrs. Das, and they came home and they were just saying, आपको सेवा में चलना चाहिए, आपको देखना चाहिए पति कैसा होता है, and all. So then my hubby, looked at Dr. Das and उनके पैर छुए, बोले, "सर आप मुझे पहचानते हो? You happen to be my economics teacher in the केंद्रीय विद्यालय." So Dr. Das said, "अरे वाह, ये तो बहुत क्लोज हो गया, चलो ठीक है, अब इनको आप तैयारी करवाओ and let she go to Puttaparthi to attend to the seva." My both kids were very small. I've got two boys. Both of them were quite small that time. So hubby said, "Do not worry. I will manage." My mom-in-law was also with us. So he said, "You carry on." I said, "Okay." And while we were preparing for the Prashanti Seva, there was a uniform which was supposed to be, fixed. That was in a white color sari. They said, while you take Padamashkar of Swami, you have to wear white sari. Now, in our South Indian culture, we don't wear white saris. So then I asked my mother-in-law, she said, "Try if it has some booties or a little, border in the edges and all. So try like that." I said, "Okay." So one fine day, I took my younger son. I went to the market to get the sari from a shop. And apparently that day happened to be some strike and all the shops were closed. So I still said, "Okay, kuch to khula hoga, let me go and try." So I was walking and walking and walking, and suddenly I found one Mafatlal store was open in the market. So I went there and I just looked at the sari, I liked it, and I said, "Okay." And when I just opened my bag to pay the amount, I found that my wallet isn't there. It was missing. I looked everywhere. I couldn't find it. Then I told the shopkeeper, "You keep the sari with you. I stay here only close by. I'll come. I don't know where did I lose my wallet. I'll find it and I'll come. But please do not give the sari to anyone. Keep it safely." I said, "Okay, don't worry." So I took my son back and we were walking all through the roads. We were, looking here and there. I couldn't find my wallet. Then I came back. I was very, very saddened. I came back home and I told my hubby about it. And my hubby says, "Oh, किसी के हाथ लग गया होगा, चलो छोड़ो, जाने दो. Think that you serve some poor people." I said, "That is okay, but still, दुख हो रहा है कि मैंने वो प्रशांति सेवा की साड़ी के लिए पैसा रखा हुआ था, वो भी गायब हो गया." I was really off
very, very off. Then lunch time के आसपास, I was serving food to my hubby and he says, खाना क्यों नहीं खा रही? I said, no, मेरा मूड नहीं कर रहा है क्योंकि I lost weight. अरे छोड़ो, भूल गया तो भूल गया, कोई बात नहीं. That's okay. I said, स्वामी की इतनी मैंने miracles सुनी है, so many leelas that I've heard about. Can't it be that Swami, does a miracle to me? He says, हाँ, तू अभी आई है स्वामी के फोन में, स्वामी तेरे को miracle कर. So I said, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. That evening, there was a bhajan in one of the houses, and I went to that bhajan. I got a bit late, so I sat in the last row. And before going to the bhajan, I called my sister and I told her, "Aaj aise aise bhajan hai. Please, can you teach me a new bhajan?" So she taught me a new bhajan. I sang in front of her. And then she says, yeah, perfect. Ab tu ja, wahan jaake gaa le. So I attended the bhajan. And I was just, before sitting at the bhajan, I go down and I was praying to Swami, Swami, koi miracle kar do कि लोग मुझे बोले विशालाक्षी तेरा वॉलेट मिल गया. Anyways, I was just thinking in my mind and I attended the bhajan. I sang bhajan. Once the bhajan got over, and the lady in the front row, she called me and she says, Visalakshi, तुम्हारा आज कुछ खोया है क्या? So I said, हाँ आंटी, आज मेरा वॉलेट गुम गया, मैं बड़ी दुखी हूँ. मैंने पैसे रखे थे प्रशांति के यूनिफॉर्म की साड़ी खरीदने के लिए, गुम हो गया वो. She said, don't worry, मिल गया. And I really didn't know how to react. मेरे आंखों से आंसू एकदम गिर रहे. And मैंने बोला, ओ मैं तो स्वामी से खाली प्रे किया था कि कोई मिरेकल नहीं हो सकता. He did this miracle. I said, आंटी कैसे मिला? She said, आज इनके यहाँ पे कॉल आया था. There was one gentleman who had called us, and he says, कोई विशालाक्षी रहते हैं यहाँ पे. So वो आंटी ने बोला, विशालाक्षी तो नहीं रहते हैं, must be definitely a साई devotee. तो आप क्या हो गया? So that guy said, मैं रोड में ऐसे ही घूम रहा था तो मुझे कुछ ग्रे कलर का नजर आया एक वॉलेट. मैंने कहा शायद इधर उधर किसी का छूट गया हो गया. मैंने उठाया उसको और उसमें देखा, उसमें सारे साई भजन के लिस्ट, मंथली लिस्ट उसमें था. तो दैट्स व्हेन आई कॉल्ड यू. उसमें काफी सारे नंबर्स दिए हुए थे, बट कोई भी नंबर नहीं लगा, बट यही नंबर लगा जिनके घर में भजन. एंड उन्होंने बोला कि उन्हें बोलिए उनका वॉलेट सेफ है, उसमें पैसे भी हैं और उनकी चीजें हैं, आप उनको बोलिए मेरे से आके लिए. So that auntie gave me the address of the telephone number and the address of that guy. So I came back home and I was banging on the door with so much of an anxiety. And I told my hubby, oh, look, I found my wallet. He said, you found your wallet? Where did you get your wallet? कोई चोर आके तुझे दे के गया? I said, no, चोर नहीं आके गया. बाबा ने मुझे मेरा वॉलेट पहुंचा. I said, कहाँ है? So I told him कि किसी को मिला है and we have to go to him. That was also close by to my house. And me and my hubby, we went to his house and I introduced him. I introduced myself to him and told him कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, ये मेरा वॉलेट. So that guy gave it to me. He said, नहीं भी मिलता तो उसमें कुछ बैंक का कुछ डिटेल लिखा हुआ था, कुछ कॉपी थी उसमें. तो मैंने सोचा अच्छा बैंक से मैं आपका एड्रेस दे दूंगा और आपको पहुंचा. So that's how I found that wallet. It was my first miracle. So, and then I went to that shop, bought the sari, and then the Shanti Seva. We went by Karnataka Express. We were about 1,050, all of us, for the Seva, only from Janakpuri. So the day I landed at Dharmavaram, it was 14th of August, happened to be my birthday. And I carried lots of chocolates with me to be distributed. So I distributed there. And then the bus came from Prashanti to pick us up, all of us. So we sat in the bus and reached Prashanti, straight headed to the sheds. And it was such a wonderful experience. We were singing bhajans all through in the train, morning, evening, and distributing prasad, whatever we had with us.
And everybody other than the Sai devotees in the train were so much thrilled and enjoyed the whole, company. And once we reached Prashanti Nilayam, we were asked to do the registration. And once the registration was done, they asked me, would you want to do the duty at the South Indian canteen? I said, okay, I'll do. So they gave me the duty to do at South Indian canteen. And I called my sister, I told her I've reached here safely and the duty they've given me at South Indian canteen. So she said, "Tu pagal hai kya? Ghar mein bhi kitchen mein kaam, yahan pe bhi kitchen mein kaam. Why didn't you take it at the hospital? You go and talk to your group leader and tell her or him to give you the duty at the hospital." I said, "Acha, theek hai, main bolti hu." So then I went into group leader. I requested her. I said, "Is it possible that I get my duty in the hospital?" They said, yeah, in the general hospital we need it. So you better take the duty in the general hospital. I said, okay. I didn't know my sister was pointing at super specialty instead of general hospital. So the first day in the hospital, and they said, oh, इतना young लड़की है, ये लोग general hospital में क्या कर रहे हैं? इनको super specialty में भेजो, वहाँ young लड़कियों की जरूरत है. So then I was asked to go to super specialty. So we were taken in a bus to the super specialty hospital. And I was given a duty of course, jhadu pocha only, but at the urology department. पहला कदम हॉस्पिटल के अंदर, never ever looked or dreamt as if it is a hospital. So clean, so good vibes. बहुत ही अच्छा. So hospital duty we used to do in the morning. The bus used to pick us up, and in the evening it used to drop us back. कई बार ऐसे होता था कि कैंटीन में खाना भी नहीं बचता था, तो we used to go back. चलो ठीक है, कुछ भी मिला, fruits खा लिया, चलो ठीक है. So Seva got over, and that was the time when the Kulwant Hall was under construction there, and Swami wasn't there. Swami was in Whitefield. The last day of our Seva, and the batch of us were asked to visit the Yajur Mandir. And when we went inside the Yajur Mandir, I looked at all the pictures, Swami's photos, Swami's chair, everything. And I sincerely prayed to Swami, Swami, this time I have come alone, but next time I don't want to come to Prashanti alone. Please do call my husband too, because I've seen everybody has come with their family. I was the only one who had come alone. So we were asked to get ready in the wee hours at 2 o'clock when the bus would leave for Whitefield. So we all took bath, got ourselves dressed up in that white sari, and we sat in the bus and we reached Whitefield at about 5 o'clock or 5:30 in the morning. At Whitefield, moment we entered Whitefield, we were been asked to freshen up ourselves, मुंह वगैरह धो लो, and then chai vai पीनी है पी लो, and then come and settle down. So we all sat down, gents एक जगह, ladies एक जगह, सब लोग बैठे हुए थे. And मैं बार बार इधर उधर देखूं कहाँ है स्वामी, कहाँ है, because I've never seen Swami in person. Just beside me was a lady sitting, and she was profusely crying. And I just couldn't control myself. I just patted and asked her, is everything all right? She said, हाँ सब ठीक. And she had an envelope with her. I just asked her, आपने envelope रखा हुआ है? She said, हाँ, आपने नहीं दिया स्वामी को letter? वो मुझे तो पता ही नहीं है. So she just gave me a piece of paper. She said, आपके मन में जो आता है वो लिख दो और स्वामी को दे दो. ठीक है. So I had my vibhuti prasad. I had my candies with me, the mint candies, and to be blessed by Bhagwan. So I had the small little slip. So I wrote whatever came into my mind, and I kept it ready. And at about 8:30, I could hear the flute sound, and everybody turned aside and we're looking at Swami Swami.
लेकिन मुझे तब भी नहीं दिखे स्वामी कहाँ है कहाँ है। एंड सडनली स्वामी का वो एकदम रुई के मार्फिक जो पैर उनका धीमे धीमे ऐसे आ गया, वो आंखों से आंसू आए जा रहे हैं, स्वामी आ रहे हैं। स्वामी थोड़ा सा आगे आए, हम लोगों की तरफ स्वामी आए। स्वामी asked in Hindi, किधर से आया? So we all in unison said, Swami, Delhi. Then Swami asked, petrol dala? So some were laughing and then giggling and, हाँ Swami dala. But Swami knew we all lied. No one had any breakfast or tea. We just came and sat over. Swami didn't like this, that people of Delhi, they lied. And Swami went back to his room. And we were wondering why Swami went back. We were waiting and waiting and waiting and waiting. It was almost about 12 in the noon when the Sevadal came and they said, आप लोगों ने झूठ क्यों बोला स्वामी से कि आपने नाश्ता कर लिया? स्वामी को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, क्या करें, बोल दिया ऐसे। एंड देन स्वामी आए बाहर, सबको बिठाया, लेडीज एक साइड, जेंट्स एक साइड, इन रोज, एंड स्वामी वाज कमिंग क्लोजली। मैं सिस्टर से, जब पाद नमस्कार लेना हो स्वामी का, एक हाथ से पाद नमस्कार, दूसरे हाथ से कैंडीज और विभूति ब्लेस करवा लेना क्विकली, स्वामी एकदम मूव कर जाते। ओके, स्वामी केम वेरी क्लोज टू मी। अच्छा, उन दिनों क्या होता था कि वहां पे there used to be lot of photographers and they used to click pictures, and मैं बैठी बैठी मैंने कहा, है स्वामी, ऐसा क्यों ना हो कि जब मैं आपका पाद नमस्कार ले रही हूँ, आप मेरे से चिट्ठी ले रहे हो, तो एक फोटो हो जाए। मन में ना ग्रीड डजंट गो। एंड स्वामी आए मेरे पास, मैंने उनका पाद नमस्कार लिया एक हाथ से, और दूसरे हाथ से मैंने अपनी कैंडी और विभूति ब्लेस करवाई, और स्वामी चले गए। उसके बाद बस फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, एंड देन वी हिट स्ट्रेट टू द बैंगलोर स्टेशन टू बोर्ड द ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस बैक टू दिल्ली। मैं दिल्ली आ गई। 3-4 रोज के बाद हमारे जो जेंट्स भजन इंचार्ज थे, his wife called me and she said, Visalakshi, are you back? I said, हाँ जी, मैं आ गई। So how was the सेवा? Went off very well. बहुत अच्छा आया, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। She said, मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी पिक्चर इतनी अच्छी आई है, स्वामी आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपसे चिट्ठी ले रहे हैं। Said, what? आपके पास कहाँ से है? She said, हाँ, जो सेकेंड बैच वाले आए हैं उनके पास वो फोटो थी, आपकी 2 फोटो है। अच्छा, मैं आके आपसे ले लेती। Swami fulfilled that desire also of mine. And this went off, and then I was attending all the activities here and there. Then came the year 1995 end till beginning of 97. A real turning point. My hubby didn't like me, running away all the time, attending to the bhajan, going for any of the Sai activities. He said, "Kya hai ye sab pakhand hai, ye hai, wo hai." He started saying bad about Swami. I said, नहीं, इतने लोग, इतनी लाखों में जनता जा रही है, वो क्या, किस लिए जा रही है? नहीं, तुम इसलिए जाती हो कि भगवान ने तुम्हें आवाज दी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, नहीं जाओगी तुम। फिर भी मैं कभी कभी छुप छुप के जाती थी, बट देन एवरीबॉडी, ऑल द एल्डर्स, दे टोल्ड मी, नहीं, तुम ऐसे छुप छुप के मत आया करो, तुम सिंसियरली स्वामी से प्रे करो, भगवान तुम्हारी हमेशा मांगेंगे, और जब तुम्हारे हस्बैंड का आए तब तुम भजन। So the 2 years went back. मेरे घर में कोई स्वामी की फोटो नहीं, कुछ नहीं। छोटा सा एक पेंडेंट मैंने रखा हुआ था जो मैं पत्ती से लेके आई थी, उसको एक विभूति के डब्बे में मैंने डाल के रखा, अभी भी मैंने रखा कि स्वामी, मेरे हस्बैंड आपकी कोई भी तस्वीर ऑफिस घर पे रखने नहीं देते हैं, तो मेरे को नहीं मालूम, ये कहीं से भी सेफ्टी के साथ रहनी चाहिए। एंड I kept praying to Swami, पता नहीं कब टाइम आएगा, आप कहते हो 1 कदम रखो, मैं 10 कदम साथ चलूंगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा। बहुत रोती थी, बहुत रोती थी,
खूब आर्ग्यूमेंट भी होता था घर पे, क्यों हो रहा है ऐसे, किस लिए हो रहा है, व्हाई डोंट यू लेट मी गो एंड अटेंड टू द भजन्स, नगर संकीर्तन, दिस दैट। से नहीं, तुम नहीं जाओ, मुझे नहीं पसंद। Kept quiet. Then comes the year 1997. I think that was a school vacation for both my kids. मैं हबी से चल एक साउथ का ट्रिप मार के। So then I told him, okay, under one condition, that my first visit will be to पुट्टपर्थी। आप मत आना, भले दर्शन मत करना, आप कमरे में ही बैठे रहना, मैं अपना दर्शन करना चाहता हूँ। मान गए, कहते ओके टिकट करवाते हैं, हम चलो। टिकट करवा ली, लेकिन टिकट वेट लिस्टेड। स्वामी इतनी मुश्किल से मेरे हस्बैंड माने हैं और टिकट वेट लिस्टेड है, नहीं हो रहा है, कैसे करूंगी स्वामी, कितनी परीक्षा लोगे आप, like that. So finally the ticket got confirmed and we boarded the train and we reached पुट्टपर्थी। पुट्टपर्थी पहुंचे तो मैंने अपना जो 94 में सेवा किया था उसका आई कार्ड मैं लेकर के गई थी, so that I get the accommodation, there shouldn't be any problem. So I went to the accommodation office and I requested them, saying that I've come here for the second time, but my family, my husband and my children, they've come here for the first time, so please give us an accommodation. So I got the accommodation somewhere in S block, I think, and we stayed there. शाम के वक्त जब स्वामी दर्शन देने आते थे तो आई टोल्ड माय हबी कि मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, आपने आना तो। नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं तो कमरे में ही रहूंगा। ओके, ही डिडंट कम। मैं अपना चली गई एंड दर्शन के लिए बैठ गई बच्चों के साथ, बड़े अच्छे से स्वामी के दर्शन हुए। उसके बाद में मैं आराम से बच्चों को लेके कमरे में जाती हूँ एंड मेरे हस्बैंड जो है वहां पे कमरे में होते ही नहीं, ताला लगा हुआ है। अरे तो है ही नहीं ताला, ना चलो वी वेर वेटिंग आउटसाइड। ये पूरा अपना दर्शन, माय हस्बैंड आल्सो हैड द दर्शन ऑफ स्वामी, खूब दर्शन करके इधर उधर घूम घाम के पूरा परती वगैरह आराम से पहुंचे। कहते वाह, यहाँ तो पाइप खोलो पानी ऐसे आता है जैसे झरना बह रहा है। वाह, ना पीसफुल, कितना काम, कितना सीरीन एटमॉस्फेयर है। चलो तुम ऐसा करो, एक दिन अपना और एक्सटेंड कर दो। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। मैं अकोमोडेशन ऑफिस भागती हुई गई, because sir, is it fine if I get my accommodation extended for one more day? He said, you already requested for only one night, but अब तुम बोल रही हो मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। Said, sir, just one night only, please. Said, okay. दे दिया। दूसरे दिन भी हुआ अच्छे से दर्शन, खूब रज रज के स्वामी के दर्शन किए, भजन से अटेंड किए और कमरे में आ। फिर भी मन नहीं माना, मैंने कहा स्वामी बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने को, ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन और, एक दिन और। बट इनको कौन समझाएंगे, मानेंगे ही नहीं। जैसे चल ऐसा है यार, तेरा मन कर रहा है ना, एक दिन तू एक दिन और हो जाए। वो खुशी की सीमा ही नहीं थी। Again I came back to accommodation. I said, sir, just one night, only one night. I will not come back here again to ask you for the extension of my accommodation. He said, no, if you ever come, then I'll put you straight in the shed. I'll not give you room. I don't have rooms. I said, okay, sir, please one more night. बस उन्होंने एक नाइट और हमें एक्सटेंशन दी। हमने खूब स्वामी के दर्शन किए बड़े अच्छे से। इतना थैंक्स बोला स्वामी को कि स्वामी जो इच्छा है एकदम आप पूरी कर देते हो। और बस ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एंड हबी देन went for the seva 98, 99. Regularly, hubby was attending the seva. Though I could go once a while, but hubby was very regular. And in 2003, my hubby had some problem in his stomach. So we really didn't know, what the problem is. Was it gastric or is it some pain? What is a gland? We really couldn't figure out. We underwent so many tests for him. Nothing worked out. So finally, we went to a gastroenterologist at the AIMS, and he had suggested that, there's some problem in your gallbladder, so you better get that removed.
it won't do any harm, so it's okay. I said, okay, so where should we get the operation done? He said at AIMS, I would not recommend, because since you can afford, you can get it done somewhere outside. And here there is a lot of queue for everything. We have short of beds, we have cancer patients. So if you can manage outside, please get it done. But I would recommend आप laparoscopy करा. So we said, okay. So we were looking for the laparoscopy clinic close by in Janakpuri. So we found one. And we went to the doctor, we seeked an appointment, and then the doctor said, I wouldn't go by the reports of the AIMS, you'll have to undergo all the tests once again. So we underwent the tests once again, and the doctor said, yes, your gallbladder has to be removed. So I'll give you a date for the operation. It will be through laparoscopy. So the day of the operation had come, and we got my hubby admitted in the nursing home, and the operation went by. In the middle of the operation, the doctor came out, and I was looking at the doctor, and I was, crying and crying. What has happened? It's just come out in between the operation. He was in his full dress only, the doctor. So he said, no, beta, rote nahi hai. डरने की कोई बात नहीं है, मैं ये बताने आया हूँ that the operation went off very well, but उनके small intestine में एक gland grow हो रहा है, which we need to remove it. और उसके लिए if you want to get it done now, it is fine. Otherwise, आपको open heart करके फिर वो करना पड़ेगा, which will be too cumbersome. Okay, आप कर दीजिए doctor, you are the best judge, so you better do it. So doctor did that, and the operation was successful. Abhi came back home, and he was on bed rest for almost 2 months. So 2 months, really taking care of him. He was on liquid diet, then semi-liquid. Slowly, gradually started picking up, and then he was all right. So one day he said, why don't you go and attend to your bhajan? 2 months, you've not gone to bhajan. Why don't you go today? It was a Thursday. I said, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, टाइम पे आपको कुछ ना कुछ देना होता है, सो रहने दो, कोई बात नहीं, मैं फिर चली जाऊँ. नहीं तू जा ना भजन अटेंड करके, मम्मा इज हियर, सो शी टेक केयर, इट्स बैरली 1 घंटे की बात है, सो यू बेटर गो एंड अटेंड. ओके, मैं गई, भजन अटेंड किया. भजन अटेंड करने के बाद मैंने रिक्शा पकड़ी और आई वाज कमिंग बैक होम हमिंग भजन्स. On the way, I found the street where the rickshaw puller was. There was no street lights over there. And there were 2 guys in a bike who came behind my rickshaw. And ऐसे पीछे मेरे गले में हाथ मारा and took off my Mangalsutra, showed it to me and walked off. मेरे को ऐसे लगा कुछ खुजली हो रही है. मैंने ऐसे जैसे खुजली किया, देखा मेरा मंगलसूत्र नहीं है. तो रिक्शा वाला, वो मेरा मंगलसूत्र, वो मैडम वो जो गया ना बाइक में, वो शायद लेके गया, क्योंकि ऐसे दिखाते हुए गया. मैंने उसको बोला, भैया रोको जरा, वहां पे देखते हैं. अरे मैडम, मैं कैसे रोकूंगा, वो तो बाइक में चला गया आगे, कैसे आप ढूंढोगे, कैसे पकड़ोगे. And there used to be one check post close by. So I told my rickshawala, I said, you take me to the check post, let me go and lodge a complaint. I went there, the check post guy said, मैडम वो तो चला गया होगा, कहाँ चला गया, कहाँ देखेंगे, कहाँ ढूंढेंगे. मैं रोती घर आके मैं बहुत जोर की रोती आ रही थी. हस्बैंड रियली गॉट स्कैर्ड. अरे क्या हुआ, ये रोती क्यों आ रही. I said, I lost my मंगलसूत्र. My mom-in-law said, don't worry, ठीक है, गोल्ड ही तो है, चला गया, कोई बात नहीं, और बना ले, तुझे कुछ नहीं हुआ, you are safe. नहीं मम्मा, मुझे मंगलसूत्र चाहिए. There was Swami's picture in our front rooms. I was looking at Swami and kept, started crying. Swami, अगर मेरा मंगलसूत्र मुझे नहीं मिला, मैं आज के बाद आपका नाम नहीं लूँ. I just left a bow to Swami. It was a challenge. My husband said, तू पागल है, क्या बोल रही है.
ऐसे नहीं, मुझे मेरे को मंगलसूत्र चाहिए, कुछ हो जाए। रोती रही। माय नेबर केम, क्या हो गया, व्हाई आर यू क्राइंग? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो, कोई बात नहीं, गोल्ड ही तो है, चला गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आपकी जान तो बच गई है, आपको कुछ नहीं हुआ है। ट्राई टू कंसोल मी एंड एवरीबडी वेंट। मैं बैठी मायूस, ऐसी ही बैठी रही। 15 मिनट के बाद देयर वाज अ बेल एट द डोर एंड I went and opened the door. I found the same rickshaw fellow who dropped me home. He was on the door. He said, "माँ जी, आपका चेन मिल गया।" अच्छा, चेन मिल गया? कहाँ से मिला? नीचे पड़ा हुआ था? He says, नहीं माँ जी, वहां पे किसी को मिला है, तो वो कह रहे हैं कि आप जिनको छोड़ के आए थे उनको बुला के लाओ और बोलो उनका चेन मिल गया। द रिक्शा फेलो सेड, आपको छोड़ करके मैं वापस वहीं पे गया था देखने के लिए कि कुछ मिले, तो वो उनको मिला, तो उन्होंने बताया कि भैया किसी का कुछ गुमा है क्या? तो बोले हाँ, अभी एक मैडम को मैं मंदिर से घर छोड़ के आया हूँ, उन मैडम का चेन छिन गया था। अब विश्वास नहीं हो रहा कि वो जो बाइकर थे वो ऐसे दिखा के जा रहे हैं और ये चेन नीचे गिरी है, कैसे गिरी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। माय सन रैन and he went with that rickshaw fellow and he said, "Uncle, मेरी मम्मी का चेन." So that gentleman said, अच्छा आपकी मम्मी का है तो आपकी मम्मी को बुला के लाओ और आपकी मम्मी को बोलो, बताएंगे वो चेन में कैसा डिजाइन था, तभी मैं मानूंगा। So then I went back and I told him, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे इसमें डिजाइन है, दिस इज मंगलसूत्र, ये हमारे साउथ इंडियन डिजाइन में होता है, ऐसे हो। said okay. So he gave it to me. मैं इतना रोई स्वामी के सामने, स्वामी मेरे से गलती हो गई, मैं कभी ऐसे चैलेंज नहीं करूंगी आपके साथ। बहुत रोई। ये सब हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद अब मैं स्वामी को थैंक यू बोलूं तो कैसे बोलूं, बस खाली ऐसे थैंक यू बोलूं। मेरे को ये था कि मैं पुट्टपर्थी जाऊं और स्वामी को जाके थैंक यू कैसे बोलूं, कैसे जाऊं। सो 2004 हमारी भजन इंचार्ज थी, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट थी, स्वर्णलता आंटी। उनका मेरे पास फोन आता है, विशालाक्षी। हाँ जी आंटी, सायरा। सायरा बेटा पुट्टपर्थी चलोगी? शी आस्क्ड। आई सेड आंटी पुट्टपर्थी तो जाना है लेकिन कैसे जाऊं? शी सेड ऐसा है, शिवरात्रि है और दिल्ली से इतने सिंगर्स जा रहे हैं, तो तुम बताओ चलोगी तो? ओके ठीक है, मैं आऊंगी। स्वामी ने मुझे फिर एक मौका दिया और गई। शिवरात्रि में स्वामी को इतना थैंक यू बोला। आई कैरिड अ चेक कि स्वामी इतना किया आपने। सो और वहां पे गए, शिवरात्रि पूरा अटेंड किया। और जब शिवरात्रि के टाइम पे हमें 2 बार टर्न मिला भजन गाने को एंड स्वामी ने शिवलिंग निकाला गोल्ड में, वो देखने को मिला। बता नहीं सकती, खुशी की सीमा की हद ही नहीं थी। सो गुड, फुल ऑफ ब्लिस एंड जॉय। बस ऐसे ही चलता रहा। 2002 की बात है। बेटा जो है, he had finished his schooling and wanted to get into his college admission, and he scored quite well, but he wasn't getting admission in any of the colleges, in Delhi colleges. We didn't know what to do. First cutout chala gaya, second cutout chala gaya, third cutout was left behind. One of his friend, classmate rather, he came and he says, "यार PGDAV college में अभी भी cutout है, तू वहाँ डाल, apply कर." So then he applied there, and in the meantime हमने Delhi College of Arts and Commerce में इसको full size honors के लिए enroll कर दिया था. But he wasn't interested to get on to full size honors. He wanted to do this BCom. अब वहां पे भी एडमिशन करा दिया और यहाँ पे भी आ गया, तो क्या करें? सो देन अब पीजीडीएवी कॉलेज सुना तो somebody said वो पीजीडीएवी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, वो साउथ इंडियन है, उनका ये नाम है और वो जनकपुरी में रहते। मेरे दोनों कान खड़े हो गए जैसे जनकपुरी को। फिर पता लगा कि एड्रेस वो C2 ब्लॉक में। So one of us devotees was in C2 block. I called that uncle
एंड आई सेड अंकल आपके ब्लॉक में ये हैं पीजीडीएवी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, या प्लीज आपके आरडब्ल्यू के डायरेक्टरी से उनका नंबर मिल सकता है? सेड हाँ बेटा मैं देता हूँ. So he gave me the number and I called. It was around 8:30, 9 o'clock in the evening. I called him. I said, sir, I'm so and so, so and so. I heard there are still some admissions left out. The third cutout is still to be taken off. So do you think? He says, you send your son, but I don't promise. Okay. So अगले दिन हमने क्या किया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स से इसका फॉर्म विड्रू कराया, वहां से took out all the certificates, and my hubby and my son, they ran to PhDA. They went there and he looked at the percentage of the marks and all, and he says, no, I can't give you the admission. But I never promised. I know I spoke to your mother, but I never promised you an admission. My hubby said, oh, we actually got him admitted there. Now we have withdrawn from that college. We have come here. What to do? He said, I don't stand responsible. Did I promise to you? I didn't. So I don't know what to do. Please. And I can't help. बड़ा बहुत ही परेशान हो गए हबी, और बेटा भी बहुत परेशान हो, मम्मा क्या करूं मेरे साथ ऐसे ऐसे. प्रे टू स्वामी, स्वामी कुछ करो. My hubby was still waiting, outside in the veranda of the college, and the principal suddenly comes out and says, excuse me, Mr. Jagannathan, can you please come inside with your son? So he went inside. He says, ऐसा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको मना करते हुए. समवेयर मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपके बच्चे को एडमिशन मना करूं तो मेरी आत्मा मुझे मार दे. कुछ तो है कनेक्शन. तो आप ऐसा करें, मैं एडमिशन दे देता हूँ आपके बच्चे को, लेकिन प्लीज बाहर जाके मत बोलिए. So son got the admission there and he called her. He says, Mama, मेरा एडमिशन हो गया. said, oh, thank God, thanks to Swami. शाम को जब हम ऑफिस से घर जाने लगे, I told my hubby, we'll buy some sweets and let's visit that place. उनके यहाँ जाके, just as a gesture, we'll say thank you to him because he gave admission. हम ऐसे ही जा रहे थे, तो जब उनके घर के पास पहुंचे तो मैंने कहा, स्वामी क्यों ना ऐसा हो, ये भी साइन डिवोटी निकले, हो सकता है कोई कनेक्शन, तो कोई तो वजह होगी जब इन्होंने एडमिशन दिया मेरे बेटे. मैं गई, जैसे ही मैंने उनका बेल बजाया दरवाजे पे, आंटी कम्स आउट एंड विशालाक्षी साई राम, शी सेज, आंटी ये आपका घर है? या मेरा घर है, माय हस्बैंड इज मिस्टर कृष्णमूर्ति. खुशी की फिर कोई सीमा नहीं रही. फिर गए वहां पे, जाके उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बेटे कहाँ रहते हो, कहाँ हो, आपके पेरेंट्स कौन है. सो आई टोल्ड हिम फादर वाज सो एंड सो नो. वो देखा, मैंने कहा था कि मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी अगर इस बच्चे को मैं एडमिशन नहीं देता. योर फादर एंड माय फादर वेर टुगेदर इन इंडिया रेडियो, एंड मेरे को वही खटक रहा था, अच्छा तो उनके पोते हो आप, चलो खुशी हुई जानकर. सो दैट वाज. बच्चे को फिर ये बोला, भाई प्रिंसिपल ने आपको वो दिया है, वहां कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई वहां पे कोई नॉटीनेस नहीं होना चाहिए, ना पढ़ाई करो. सो दैट वेंट ऑफ. एंड इन 2007 the younger son, he was to get his engineering admission. He scored very, very marginal marks in his 12th. And he said, I wanted to get into engineering, but मैं और कुछ नहीं लूंगा. I don't want BSc honors, or I don't want anything else to do. I wanted to get into engineering. अब इतने कम मार्क्स में कहाँ इंजीनियरिंग के लिए, कहाँ भटके. And we were just hand to mouth. We couldn't really afford for any under table or something. We didn't know what to do. Again, स्वामी आपका बच्चा है, आपने जो करना है करो, नहीं मालूम कैसे करोगे आपको ही पता. I was in the office and one of my classmates, she calls him, अरे वीजा कैसी है तुम? कहा यार अच्छी हूँ, थोड़ी परेशान है. क्या हो गया? ऐसे ऐसे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा है, and he is bent upon doing only engineering and he doesn't want to get into any of the colleges here or any other subject.
शी सेड ओ कांचीपुरम में शंकराचार्य का यूनिवर्सिटी है, प्लेस कॉल्ड एनाथुर, मेरी बेटी वहीं पे पढ़ रही है, तुम ऐसा करो मैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का नंबर देती हूँ, बात करो, उनके पास अभी भी कुछ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीट्स अवेलेबल है. I took the number, I spoke there in the administration and they said हमारे पास सिर्फ मैकेनिकल में है, we don't have in computer science. If you are interested, you please fill up the form and all, deposit all the money, make the draft and then send your ward in person. ठीक है, मैंने फॉर्म फटाफट डाउनलोड किया, अप्लाई किया, बैंक ड्राफ्ट बनाया, कोरियर कर दिया, सब कुछ हो गया. एंड देन विद अ कॉपी ऑफ इट आई बुक्ड माय हबी एंड माय सन टू कांचीपुरम. व्हाट आई डिड, मैंने मेरे पास जो भी गोल्ड ज्वेलरी था मैंने उठाया, एक पोटली बांधी अपने हस्बैंड को दी. मैंने कहा वो अनडेटेबल बोलते हैं, कुछ भी मांगते हैं, देखो इससे कुछ चल जाएगा, आप बच्चे का एडमिशन करवा दो बस. हबी वेंट, वहां गए, सारा कुछ हुआ, बोला कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस में हम नहीं दे सकते, यस मैकेनिकल में है, इफ योर गॉड इज केपेबल इनफ हम उसको फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल देते हैं, इसको बेटर मार्क्स, हम इसको सेकेंड ईयर में देन वी शिफ्टिंग टू कंप्यूटर साइंस. एंड जयेंद्र सरस्वती खुद थे वहां पे और उन्होंने बोला अरे बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री, व्हाई डोंट यू टेक दैट सब्जेक्ट, व्हाई आर यू बेंट अपॉन टेकिंग कंप्यूटर साइंस, आप ये लो, खूब रोशन होगा आपका नाम. सो देन अभी वेंट देयर एंड पूछा उनसे क्या फी वगैरह है, कुछ देना है, से नथिंग, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी बेसिक फी है आप वो दो बस काफी है. मतलब स्वामी अगेन हेल्प मी आउट, एक नया पैसा स्वामी ने नहीं लिया और एडमिशन हो गया. सो दोनों बच्चे पार. My son after his graduation he had done, he had applied for this combined defense services and he cleared out, wanted to get into the army, the LS, and हो गया उसका सब कुछ, सिलेक्शन वगैरह हो गया. एंड बिफोर ही वाज टू गो फॉर हिज ट्रेनिंग एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन चेन्नई, OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी. सो ही सेड मम्मा मेरे को ना मन कर रहा है, मैं ना बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ बिफोर आई प्रोसीड टू माय ट्रेनिंग. या यू मस्ट, श्योर, प्लीज गो. लेकिन मम्मा मेरे को ना वहां पे ना स्वामी के रेजिडेंस में ड्यूटी चाहिए, इधर उधर नहीं चाहिए. What nonsense! Why are you talking like this? पुट्टपर्थी itself is a place. आप उस भूमि में पैर को धन हो जाते हो. Why do you have this in your mind? यहीं करना है, वहां नहीं करना है, जहां मिलती है करो. So he and my hubby, we took him and they for the सेवा there. And उस टाइम पे क्या हुआ था कि वहां पे उन्होंने बोला था कि जिनको ड्राइविंग आती है वो बच्चे थोड़ा साइड में खड़े हो जाए, सिलेक्शन इस तरह से होगा. My son was good at driving, so he said, "हाँ जी, I'm carrying my license too." And बस जी उन्होंने बोला ठीक है आपको स्वामी के रेजिडेंस में ड्यूटी, बिल्कुल स्वामी के रेजिडेंस के बाहर इसका. एवरी डे आई टू आई कॉन्टैक्ट विद स्वामी. स्वामी को जो खाना जाता था वो इसको मिलता था खाने के लिए एज अ प्रसाद. मम्मा कितना अच्छा खाना मिलता है स्वामी, बहुत अच्छा लगा. So he came back and then he went for his training. He became a lieutenant and अच्छा लगा. मतलब बच्चे दोनों तर गए, पार हो गए. Both of them are married now. One is in Canada, one is in Germany. And बस जर्नी ऐसे ही चलता रहा. 2003 की ही एक घटना थी जब हबी का ये ऑपरेशन हुआ. वो स्वामी का बर्थडे था 23rd of November. And my sister was asking क्या करने वाली है तू, क्या करेगी. ऐसे कुछ नहीं, हमारे यूनिट में नगर संकीर्तन था, आई अटेंडेड दैट. अभी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं, आई एम फ्री ओनली, आई एम एट होम. शी सेज हमारे यहाँ एकता अपार्टमेंट है, वहां पे एक आंटी हैं जिन्होंने शिरडी साईं की मूर्ति जो है अपने यहाँ प्रतिष्ठा की है और उनके यहाँ पे ना सत्य साईं का भी भजन होता है और शिरडी साईं की आरती भी होती है. तो तुम आना चाहो तो आ जाओ, अच्छा लगता. बट शार्प 12 o'clock उनकी आरती शुरू हो जाती है शिरडी बाबा की आरती थ्रू, तो तुम पहुंच जाना.
ओके। एंड मैं यहाँ से ऑटो ढूंढूं, मुझे कोई ऑटो ना मिले, रिक्शा करके इधर गए उधर गए उधर गए, कहीं से कोई ऑटो नहीं। सडनली वन ऑटो came and he dropped me, but at the nick of the time, just at 12, 1 मिनट बचा होगा, मैं उनके यहाँ पहुंची। और माय सिस्टर से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, कोई बात बात आवाज नहीं आनी चाहिए, आरती अटेंड करो। ठीक है, आरती अटेंड किया, शिवदेव साईं की आरती पूरी अटेंड की, उसके बाद सत्य साईं की आरती हुई। होने के बाद में वो आंटी जिनके यहाँ पे मूर्ति प्रतिष्ठा थी, उन्हीं का घर था, वो विभूति का प्रसाद सबको बांट, तो विभूति की प्रसाद बांट रहे थे। जब मेरे पास आए वो आंटी, उन्होंने पूछा बेटा आपका नाम क्या है? My sister didn't introduce me that she's my sister or something because there was no time at all to get introduced. आरती का टाइम हो गया था उस टाइम। So I said, आंटी मेरा नाम विशालाक्षी। She said मैं जब आरती कर रही थी तो बाबा ने मुझसे बोला कि काशीवासी आई हुई है तुम्हारे घर, और मेरे जो पादुकाज हैं वो काशीवासी को दो, वो बहुत परेशानी में है, और उसको बोलो रोज मेरे पादुका में अष्टोत्र करेगी, सत्य साईं का अष्टोत्र नामावली करेगी, ये पादुका उसको दे। सो आंटी ने बोला एक सेकंड रुको करके, उन्होंने श्री साईं के पादुका उठाए और मुझे दिए। बोले बेटा ये स्वामी ने मुझसे, मैं जब आरती कर रही थी तो बात किया मुझसे, और बोला ऐसे ऐसे है, काशीवासी को। एंड दोस पादुका आई स्टिल हैव इन माय मंदिर, एवरी डे विदाउट फेल I do सत्य साई अष्टोत्र नामावली। स्वामी की इतनी परिपूर्ण परिपूर्ण ब्लेसिंग्स है, मैं बता नहीं सकती। दैट्स हाउ चल रहा है, चलता ही जा रहा है। स्वामी हमेशा कृपा सब पे बनाए रखें और ऐसे ही सबको आशीर्वाद देते रहे। गोपाला गोपाला राधालोला मुरली लोला नंदलाला, साई मुरली लोला नंदलाला, गोपाला राधालोला केशव माधव जनार्दना, केशव माधव जनार्दना, वनमाला वृंदावन बाला मुरली लोला नंदलाला, साई मुरली लोला नंदलाला, गोपाला राधालोला। जय साई।